परमार्थ में व्यवहार, हम रहे अपने लिए, हमको सभी से कर्ज है। गुरुदेव ये आशीष है, जो सोचने का फर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के, नित नेम के, सधर्म के, सत्कर्म के, अन्याय की, अभिमान की, सेवा कर्म को दास की, परवाह नहीं हो जाने, छोटे न हो हम बुद्धि से, ओ विश्व में से ईश में, ओ राम में और कृष्ण में, जगदेव में जगदीश में, हर इंद्रियों पर ताव कर, हम वीर हो अति धीर हो, उज्ज्वल रहे सर से सदा, निज धर्म रत गंभीर, अति शुद्ध हो आचार से, तन मन हमारा सर्वदा, अध्यात्म की शक्ति हमें फल भी नहीं करते जुदा, हमारे आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, घर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे सम रहे। So thank you. जैसा you all know, today we are discussing liberalized remittance scheme. तो होता क्या है कि फॉरेन एक्सचेंज की डीलिंग, जैसा कि पिछली बार अपन ने देखा था, FEMA 1999 का जब अपन ने ओवरव्यू का डिस्कशन किया, तो इन ईच ऑफ दी फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, जो सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये होता है कि साहब कहीं ऐसा तो नहीं हो कि फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन की वजह से हमारा जो रिजर्व है फॉरेक्स का वो कम हो जाए। तो इसलिए इन सारे ट्रांजेक्शन्स को सरकार ये कोशिश करती है, दे ऑलवेज ट्राई कि ट्रांजेक्शन इस तरीके से हो दैट इज इन फेवर ऑफ द ओवरऑल रिजर्व ऑफ द कंट्री। तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस अपन ने पिछली बार पढ़ा और उसमें देखा कि जनरली जो है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस दे आर परमिटेड एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर प्रोहिबिटेड। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस वो नहीं है कि आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली तो वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन हो गया। आपने मशीनरी खरीदी और उसका पेमेंट कर दिया तो इट इज करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन होंगे। So there is nothing with reference to the accounting of the a particular transaction. So जो रेमिटेंस स्कीम है, इस स्कीम के तहत बेसिकली व्हाट दे वांट कि सब कई लोगों को पैसा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस बाहर भेजना पड़ता है, particularly to various individuals. To facilitate that, the RBI comes out with the liberalized remittance scheme. और आज की जो हमारे स्पीकर हैं उन्होंने उसको पूरा अच्छी तरीके से तैयार किया है and they have dealt with not only the liberalized remittance scheme but other kind of remittances also. तो हम इनसे ये जानेंगे कि as an individual, particularly as a resident, किसी को बाहर भेजना है पैसा तो वो किस किस काम के लिए भेज सकता है, उसमें क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या लिमिट्स हैं, क्या वो शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकता है, क्या बाहर किसी को कोई इलाज कराना है तो भी पैसा भेज सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई टैक्स की कंप्लायंसेस भी है क्या। तो दे विल हैव ए डिटेल्ड डिस्कशन ऑन दैट एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट इफ यू हैव एनी क्वेरी विद रेफरेंस टू दिस फील फ्री टू आस्क देम, क्योंकि इन्होंने काफी रिसर्च किया है तो इनका रिसर्च का भी टेस्ट हो जाएगा। And I request all of them to introduce themselves also first, and then in which year they are undergoing their training.
Shall I start? Yes, yes. Thank you, sir, for giving the insight of this topic. So, good afternoon, one and all present here. So, today we are here to discuss over LRS, Liberalized Remittance Scheme. So, what is LRS? The Liberalized Remittance Scheme is an RBI measure that allow an Indian resident to send up to USD 250,000 per financial year, that is April to March, outside India. These funds can be used for any permissible current or capital account transaction or combination of both. Now, what is capital and current account transaction? Current capital account transaction are those transactions which affects the assets or liability, and current account transaction are those transactions which are not a capital account transaction. This will be explained in detail in the next part of our class. So before going in deep in this topic, I want to give a glimpse over the FEMA Act. So does anyone know about FEMA? Anything about FEMA? What is FEMA? Why it came into the picture? No. So FEMA is an act of the Parliament. It was passed on 29 December 1999 in Parliament. It replaced the Foreign Exchange Regulation Act. Now, why it is replaced by FEMA? Because FERA intends to regulate foreign payments and conserve forex transactions, whereas FEMA focuses on enhancing India's foreign exchange reserves and emphasizes the promotion of foreign payment and trade. नाम से clear है. FERA में क्या आ रहा है? Foreign Exchange Regulation Act. So regulation is replaced by management. The main objective of FEMA in India are to regulate foreign exchange transactions in a manner that promotes economic growth, maintain the stability of the foreign exchange market, and ensure compliance with the regulatory requirement. Now, there are some salient features of the FEMA Act. So first is regulation of transaction between resident and non-resident. जो भी transaction एक resident और non-resident के बीच में होंगे, that all are regulated by the FEMA Act. Second is freely permissible transaction on current account subject to reasonable restriction. पूरा free नहीं होगा, कुछ reasonable restrictions होंगे. FERA की तरफ बहुत ज़्यादा restrictions नहीं होंगे, but reasonable होंगे. Third is investment in India by non-resident and overseas investment by Indian resident. जो बाहर के नॉन रेजिडेंट अपने इधर इन्वेस्ट करेंगे वो भी अंडर द फेमा आता है. आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, क्योंकि फेमा सिर्फ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को ही रेगुलेट करता है. फिफ्थ इज एनी रिक्वायरमेंट व्हिच हैज टू बी फुलफिल्ड बाय द ऑथराइज्ड डीलर आल्सो कवर्ड अंडर फेमा. एंड लास्ट इज रिक्वायरमेंट फॉर रियलाइजिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स एंड रिपेट्रिएशन टू इंडिया. अपने एक्सपोर्ट तो बढ़ा दिया, अपने बाहर एक्सपोर्ट करें, बट वो मनी वापस इंडिया में भी आनी चाहिए. ठीक है, तो बिकॉज इट अफेक्ट द बैलेंस ऑफ ट्रेड. So now coming back to our main topic, that is LRS. So LRS was introduced on 4th February 2004 with an initial limit of USD 25,000 per financial year. LRS subsume both capital and current account transaction. Actually, LRS is addition to the Schedule 3rd of the CAT Rules 2000. CAT is Current Account Transaction Rules 2000. So ये उसका replacement नहीं था, ये उसमें addition था कुछ LRS के अंदर जो है वो schedule का addition. Under LRS, the capital account transaction was allowed freely, irrespective of the absence of specific provision under various capital account notification, including incorporation of entity outside India. And the last is payment by international credit card was sought to be brought under the limit of LRS, but there is a notification which clarifies that credit card while being overseas was outside the LRS till 30th September 2023, and no provision of TCS will be applicable on LRS. तो क्रेडिट कार्ड से जो इंटरनेशनल पेमेंट होंगे उसमें एलआरएस नहीं रहेगा. Now have a look on this chart. Initially the limit of LRS is $25,000, then it slightly increases to 50,000 and then 1 lakh, and on September 2007 it was 2 lakh. After this there is a sudden downfall. In August 2023 the limit was 75,000. It is because there was a depletion in the forex reserve. So RBI has changed the limit, but it is only for a slightly short period. In the next 1 year, it will be it was 1,25,000, and in the next year it was $250,000, and it continued till now. So अगर आप LRS के रेमिटेंस देखोगे अंदर LRS, तो ये ओवर द पीरियड इंक्रीज हुआ है. एक 2021 के अंदर डाउनफॉल आया था क्योंकि जिस टाइम पे कोविड पीरियड था, इस वजह से डाउनफॉल था. बाकी कंटिन्यूसली बढ़ाई है. Now LRS का बैकग्राउंड क्या है? Prior to the introduction of LRS, foreign exchanges by resident individual was governed by the Current Account Transaction Rules 2000. It has 3 schedules. First is
It includes all the remittances which are prohibited. Second is remittances allowed only with the prior approval of the concerned ministry. Concerned ministry की approval हो जाएगी तो you can remit those transactions. Third is permissible transaction. Limit is prescribed, but if you remit beyond that prescribed limit, then you have to take the approval. अब जो कैट रूल्स थे वो ओनली स्कोप डिफाइन करते हैं किसका, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन का, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन का नहीं करते. उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन इशू होता है, मतलब एलआरएस से पहले. एलआरएस के अंदर तो इंक्लूड हो गया, बट अभी मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ. तो उससे पहले जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होते थे उसके लिए नोटिफिकेशन इशू होता था, वो कैट के अंदर नहीं आते थे. नाउ द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कैट रूल्स 2000, the first point is remittance out of lottery winning. So person cannot remit the money which he earned out of lottery. लॉटरी से कमाया पैसा वो रिमिट बाहर नहीं कर सकता. सेकंड इज रेमिटेंस ऑफ मनी फ्रॉम रेसिंग, राइडिंग और एनी अदर हॉबी. थर्ड इज रेमिटेंस फॉर द परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, बैंड मैगजीन्स, फुटबॉल टूल्स एटसेट्रा. तो फर्स्ट पॉइंट में क्या है, वो लॉटरी से कमाया हुआ पैसा रिमिट नहीं कर सकता, एंड थर्ड पॉइंट में वो रिमिट ही नहीं कर सकता लॉटरी खरीदने के लिए. तो बोथ पॉइंट्स आर डिफरेंट. फोर्थ इज पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट मेड टुवर्ड्स इक्विटी इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर, होली ऑन सब्सिडियरी अब्रॉड ऑफ इंडियन कंपनी. जो इंडियन कंपनीज की बात सब्सिडरीज है उसके एक्सपोर्ट पे आप कमीशन का पेमेंट नहीं कर सकते. इज प्रोहिबिटेड अंडर शेड्यूल 1. नेक्स्ट इज रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी टू विच द रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग इज एप्लीकेबल. नाउ व्हाट इज डिविडेंड बैलेंसिंग? सो डिविडेंड बैलेंसिंग मींस एग्रीगेट डिविडेंड remitted by the Indian subsidiary company to its holding foreign company in the first 7 years shall not exceed by the amount of initial investment by the foreign holding company to the Indian subsidiary company. तो क्या हो गया, जो पहले 7 सालों में जो इंडिया में जो सब्सिडरी कंपनी फॉरेन की होल्डिंग कंपनी की, वो इतना डिविडेंड रेमिट नहीं कर सकती कि उसके इन्वेस्टमेंट से ज्यादा हो जाए. सो दैट इज प्रोहिबिटेड. नेक्स्ट पॉइंट इज पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट अंडर रूपी स्टेट क्रेडिट रूल, एक्सेप्ट कमीशन अप टू 10% ऑफ इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ टी एंड टबैको. सो रूपी स्टेट क्रेडिट नोट क्या रूट क्या होता है? इट इज अ मैकेनिज्म अंडर विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंड क्रेडिट टू अदर कंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ इंडियन रुपीज. इंडियन रुपीज में गवर्नमेंट रेमिट करती है. तो इंडियन रुपीज फॉरेनर किसके लिए यूज कर सकते हैं? अपने डेट पे करने के लिए, कोई गुड्स एंड सर्विसेज पे करने के लिए, खरीदने के लिए इंडियन रुपीज. तो अगर उससे एक्सपोर्ट हुआ है तो उसके पेमेंट में भी आप कमीशन जो पे कर रहे हो आप, वही प्रोहिबिटेड है. बट 2 केस के अंदर अलाउड है, टी और टोबैको पे, बट वो भी ओनली अप टू 10% ऑफ द इनवॉइस अमाउंट. नेक्स्ट इज पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन. सो कॉल बैक सर्विसेज क्या होता है? नाम से क्या लग रहा है? कुछ भी बोलो. मान लो कोई इंडियन कंपनी है जो बाहर भी सर्विसेज देती है. तो कोई फॉरेनर अपनी उस कंपनी के टोल फ्री नंबर पे कॉल करेगा तो उसका क्या रूल होता है? अपना पैसा नहीं लगता, सामने वाली कंपनी का लगता है. बट वो भी इसमें अलाउड नहीं है, समझ लो, वो भी अलाउड नहीं है इसमें. Next point is remittance of Indian interest income on funds held in non-resident special rupee account scheme. Now, what is non-resident special rupee account scheme? It is a facility provided by the Indian bank to the foreigners or the person of Indian origin, so they can park their foreign earning in Indian rupees in Indian bank, and they can easily handle while residing in abroad. Next is schedule 2. So ये क्या समझना है? This is the present list of prohibited transactions. Yes, LRS. Yes. तो the point is कि जैसे शुरू में किसी ने बोला कि साहब $2,50,000 की लिमिट है टू सेंड इट अब्रॉड. तो सबसे पहले तो वो जो लिमिट है ना, इसको भी डिटेल में और बताएंगे कि फाइनेंशियल ईयर वाइज है, तो दैट वी नीड टू चेक. बट जब भी हम किसी को एडवाइस करें, जब किसी से बात करें, तो उससे हम सीधा ये नहीं कहते हैं. कोई भी आपको पूछेगा कि साहब कितना पैसा बाहर भेज सकते हैं, योर आंसर वुड बी स्ट्रेट कि साहब $2,50,000 आप भेज सकते. लेकिन यहाँ किस चीज की जरूरत है? प्रोफेशनल कैपिटल. कि अच्छा भेज रहे हो, अच्छा कैसे कमाते हो पैसा, पैसे कहाँ से आए, दिस इज है ना, फॉर व्हाट पर्पस, दिस इज इंपॉर्टेंट. तो अभी जो अपन ने चार्ट पढ़ा ना, ये जो टेबल पढ़ी, वो ये पढ़ी कि भाई क्या चीज रेस्ट्रिक्टेड है जिससे आप पैसे बाहर नहीं भेज सकते. तो आगे की बात अपन बाद में करेंगे.
तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये ट्रांजेक्शन जो है, पैसे बाहर तो भेज सकते हो, $2,50,000 की लिमिट तो है, लेकिन अगर वो सोर्स ऑफ इनकम ये इनमें से नहीं, इनमें से कुछ है, तो फिर आप पैसा बाहर नहीं भेज सकते। सो इट शुड नॉट बी स्ट्रेट आंसर कि साहब $2,50,000 आप भेज दो। नाउ नेक्स्ट। Now, second schedule of CAT Rules 2000, it includes those remittances for which the prior approval of concerned ministry is required. So first is cultural tour. If a person remit for a cultural tour, it has to take the prior approval of the concerned ministry, that is Ministry of Human Resource Development. Second is advertisement in the foreign print media for the purpose other than promotion of tourism, foreign investment, and international bidding exceeding $10,000 by state government and its public sector undertaking. तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये किसको हुई, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर कंपनी अंडरटेकिंग पे, और वो भी कब हुई, जब लिमिट एक्सीड कर रही $10,000, और वो भी किन एरियाज पे, इन तीनों के अलावा। अगर इन तीनों में करती है, मान लो वो एडवर्टीजमेंट प्रमोशन के लिए कर रही थी टूरिज्म का या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के या इंटरनेशनल बिडिंग का, तो कोई लिमिट नहीं, ठीक है। थर्ड इज रेमिटेंस ऑफ फ्रेट ऑफ वेसल charted by a PSU. Typically, it involves the transfer of funds from the PSU, the shipping company, or a vessel owner for the transportation service provided. This process usually follows the contractual agreement and may involve various documentation and financial transactions to ensure the smooth operations of the charter manager. Next point is multimodal transport operators making remittances to their agent abroad. Now, what is multimodal transport operators? It is a company which provides transportation services using different mode of transportation. It includes rail, road, air, or what. Next is remittance of hiring charges of transponders like TV channels or internet service provider. Now, what is transponders? It often used in telecommunication and satellite communication system for various purposes, including broadcasting and data transmission. Next point is remittance of prize money, sponsorship of sports activity, by a person other than international, national, state level sports body if the amount involved exceeds $1 lakh. अगर इन बॉडीज के, इन जो तीनों नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल जो स्पोर्ट्स बॉडी है, इनके अलावा अगर कोई लिमिट करता है किसके लिए, प्राइज मनी, फॉरेन के अंदर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है उसके प्राइज मनी, या फिर उसको स्पॉन्सरशिप कर रहा है और वो ये तीनों में से नहीं है, और उसका अगर अमाउंट एक्सीड करता है $1 लाख तक कर रहा है तो वो परमिसिबल है, बट इससे अगर एक्सीड करता है तो फिर उसको प्रायर अप्रूवल चाहिए होगी कंसर्न मिनिस्ट्री। Last is remittance of container detention charges exceeding the rate prescribed by the Director General of Shipping. Now, what is detention charges? Detention refers to the time a container is spent outside of the port. If the consignee holds on the carrier container beyond the allowed free time, then the fees will be imposed. अगर वो पोर्ट के बाहर वो कंटेनर रह जाता है और वो उस कोई टाइम अलाउ कर दिया, उसके बाद तक वो बाहर है, तो फिर ये फीस इम्पोज होती है, ठीक है। Now, schedule third of CAT 2000. First of all, the facilities for individual. Individual can avail foreign exchange facilities for the following purposes within the limit of $250,000. Any additional remittance more than this limit, then approval of Reserve Bank of India is required. First is private visit, gift or donation, going abroad, emigration, and many more. In the next part of our class. I think तुम्हारा नेटवर्क थोड़ा सा ठीक है। The network is not. You have to share the presentation again. Stop sharing करो। शेयर नहीं हो रहा है। So, कुछ ट्रांजेक्शंस ऐसे इन्होंने बताए जहां पे इन्होंने कहा कि आरबीआई की अप्रूवल जरूरी है।
LRS के अंदर कवर तो है, बट an approval is required from the RBI for these type of transactions. तो जब कभी भी इस तरीके का कोई ट्रांजेक्शन हो तो हमें RBI के थ्रू अप्रोच करना होता है। और RBI में भी आजकल बेसिकली RBI के जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, जहां पे भी इन्होंने लिखा ना RBI की अप्रूवल चाहिए, तो लॉट ऑफ ट्रांजेक्शंस आर एक्चुअली थ्रू द ऑथराइज्ड डीलर, कि हमें हमारी एप्लीकेशन जो है वो ऑथराइज्ड डीलर को देनी होती है, फिर ऑथराइज्ड डीलर आगे जाके और RBI के साथ में करस्पॉन्डेंस करके और अपनी अप्रूवल लेता है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस जहां कहीं पे भी ये RBI की बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हुई थी ऑथराइज्ड डीलर। ऑथराइज्ड डीलर मीन्स वो RBI ही है अपने आप में, लेकिन RBI के ऑफिस सारी जगह तो हो नहीं सकते, तो उन्होंने अपने कई सारी बैंक ब्रांचेस को एज एन ऑथराइज्ड डीलर डेजिग्नेट किया हुआ है एज पर दी FEMA law. Continue. Now, a person who is resident but not a permanently resident in India and is a citizen of foreign state other than Pakistan, or is a citizen of India who is in a deputation to the office or a branch of foreign company or a subsidiary or a joint venture in India of such foreign company. तो पहली वाली कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए that he is not a permanently resident of India, and A और B में से कोई भी एक कंडीशन. Now, and he can remit up to the net salary, that is after deduction of taxes, after contribution to the provident fund and other deductions. Now, who is not permanently resident? So, if a person is if he is in employment or deputation of a specified duration for a specific job or assignment, and the duration does not exceed the 3 years, then he is a resident but not a permanently resident of India. Now, facilities for person other than individual. LRS के अंदर इंडिविजुअल के लिए है, बट अपन क्या पढ़ रहे हैं, कैट रूल, उसके अंदर शेड्यूल 3 के अंदर फैसिलिटीज फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल भी दे रहा है. The following remittances by the person other than individual shall require prior approval of Reserve Bank of India. इनके अलावा तो वो फ्रीली रेमिट कर सकता है, बट इनके लिए उसको प्रायर अप्रूवल चाहिए. तो फर्स्ट इज डोनेशन एक्सीडिंग 1% of their foreign exchange reserve during the previous three financial years, or the USD 50 lakh, whichever is less. इन दोनों में से जो लेस होगा, अगर उससे रेमिटेंस एक्सीड करता है तो उसको प्रायर अप्रूवल चाहिए RBI. और वो भी कब, जब फॉर द 3 पर्पसेस वो रेमिट कर रहा है. फर्स्ट इज क्रिएशन ऑफ शेयर्स इन रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, contribution to the fund promoted by the educational institute, and contribution to a technical institution. Second is commission per transaction to agent abroad for sale of residential flats or a commercial plots in India exceeding USD 25,000 or a 5% of inward remittance, whichever is more. अब मैं इंडिया के अंदर हूँ, मेरा कोई एजेंट है यूएसए के अंदर, और वो किसी फॉरेनर को मेरा कोई प्लॉट बेच रहा है, कमर्शियल प्लॉट या फिर रेजिडेंशियल फ्लैट जो कि मेरा इंडिया के अंदर है, तो मैं उसको पेमेंट करूंगा कमीशन का. तो ये बोल रहा है वो जो कमीशन का पेमेंट है, दैट शुड नॉट एक्सीड either USD 25,000 or the 5% of the inward remittance, जो उसको बिकने से मुझे पैसा मिल रहा है, whichever is more. अगर इससे एक्सीड करता है तो फिर प्रायर अप्रूवल लगेगी. Now the third point is remittance exceeding USD 1 crore per project for in consultancy services in respect of infrastructure project, and USD 10 lakh per project for other consultancy services other than infrastructure project. And the last is remittances surpassing either 5% of the investment brought into India or USD 1 lakh, whichever amount is greater, made by the Indian entity to cover their pre-incorporation expenses. Now, what is the eligibility criteria of LRS? Who is eligible? The resident individual is eligible. This includes all the Indian citizens and foreign nationals holding residential status in India as per the Foreign Exchange Management Act. अब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? अगर कोई पर्सन 182 डेज से ज्यादा इंडिया में रह रहा है, बट these 182 days shall not include those days for which he is residing in India for education or for vocation or business purpose or any other reason कि वो कंफर्म नहीं कितने ड्यूरेशन के लिए रहेगा. अगर ये सब तीनों पॉइंट है तो इसमें वो 182 डेज वाले इंक्लूड नहीं होंगे. और माइनर भी कर सकता है, जैसे उन्होंने कहा कि माइनर भी एलिजिबल है LRS के लिए, बट उसके लिए कंसेंट एंड सिग्नेचर ऑफ द नेचुरल गार्जियन ऑन द LRS डिक्लेरेशन फॉर्म इज रिक्वायर्ड. नाउ हु इज नॉट एलिजिबल? नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, they have separate regulation for sending funds abroad. Corporate entities,
companies, partnership firm, Hindu undivided family, and trust cannot use LRS. Now tell me one thing. मैंने सोल प्रोप्राइटर के बारे में कुछ बताया नहीं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा वो? कॉर्पोरेट एंटिटीज में काउंट होगा, मतलब वो एलिजिबल नहीं होगा LRS के लिए या एलिजिबल होगा? एलिजिबल होगा। तो उसकी लिमिट क्या होगी? इंडिविजुअल वाली होगी। और अगर वो इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल करेगा या फिर इन द कैपेसिटी ऑफ एज अ सोल प्रोप्राइटर करेगा, तो ही कैन नॉट से कि मैं अपनी कंपनी के मतलब कंपनी से तो कर ही सकता हूँ $250,000 और इन द पर्सनल कैपेसिटी में $250,000 कर सकता हूँ, नहीं, टोटल कंबाइंड लिमिट है $250,000। ठीक है। Now there are some additional points. First is no minimum income requirement exists for the LRS. कोई minimum income requirement नहीं है आपको LRS यूज करने के लिए। आपके पास PAN होना चाहिए, permanent account number and passport होना चाहिए to utilize LRS. And you should maintain an Indian bank account for at least a year before remitting funds under LRS. तीसरा क्या था? Sir, bank account होना चाहिए. Valid PAN number and passport. Yes, sir. Now, what are the remittances prohibited under LRS? जो शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड में जो मैंने बताया वो तो प्रोहिबिटेड है ही। सेकंड पॉइंट क्या है? रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया फॉर अ मार्जिन कॉल टू ओवरसीज एक्सचेंजेस एंड ओवरसीज काउंटरपार्टी। नाउ व्हाट इज मार्जिन कॉल? Margin call occurs when the value of investor's margin account falls below the broker's requirement amount. मेरा कोई फॉरेन में मार्जिन कॉल अकाउंट है, मार्जिन अकाउंट है, उसमें मैं अपनी सिक्योरिटीज होल्ड करता हूँ, तो उसकी ब्रोकर ने कोई लिमिट बता रखी है, अगर उससे मेरी वैल्यू नीचे जाती है तो मुझे एक अमाउंट देना पड़ेगा, तो उसके लिए अगर मैं रेमिट करता हूँ दैट इज प्रोहिबिटेड अंडर LRS। ये एडिशन है उस शेड्यूल का, वो शेड्यूल में जो मैंने बताया था वो तो प्रोहिबिटेड है ही, ये और एडिशनल प्रोहिबिटेड है। थर्ड पॉइंट इज रेमिटेंस फॉर द परचेज ऑफ FCCBs issued by the Indian companies in the overseas secondary market. Now, what is FCCB? These are the foreign currency convertible bonds issued by the issued in a foreign currency, which means the principal repayment and the periodic coupon payment will be made in a foreign currency. For example, a American listed company issued a foreign currency convertible bond in India. तो क्या होगा, उसका जो रिपेमेंट होगा प्रिंसिपल का वो भी वो इंडियन रुपीज में करेगी और जो उसका इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो भी इंडियन रुपीज में करेगी। ठीक है। नेक्स्ट इज remittance of trading in foreign exchange abroad, that is also prohibited. Next is capital account remittance directly or indirectly to the countries identified by the Financial Action Task Force as non-cooperative countries and territories. जो Financial Action Task Force है उन्होंने जिस countries को territories को non-cooperative specify कर रखा है उसके साथ अपन remittance नहीं कर सकते। Next point is remittances directly or indirectly to those individuals and entities identified as posing significant risk of committing act of terrorism as advised separately by the Reserve Bank of India. And last is gifting by a resident to another resident in foreign currency for the credit of letters foreign currency account held abroad under LRS. तो अगर आप गिफ्ट कर रहे हो कोई रेजिडेंट पर्सन किसी अनदर रेजिडेंट पर्सन को कर रहा है जो कि अब्रॉड में है तो वो प्रोहिबिटेड है। अगर वो किसी नॉन रेजिडेंट को करता है देन इट इज अलाउड, बट वो रेजिडेंट को कर रहा है लेकिन अभी वो अब्रॉड में है तो वो अलाउड नहीं होगा। Now, regulatory framework of the liberalized remittance system. CAT rule 2000 I have already explained. Schedule 1 and 2 also explained. Now, RBI क्या रोल प्ले करता है? तो जो मैंने लिमिट बताई थी कि चेंज हुई थी ओवर द पीरियड, so RBI was the authority to change those limits. It is a apex regulatory body. RBI issues guidelines and notification governing various aspects of LRS, including permissible transaction under current and capital account. कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जैसे अभी पैन था तो वो कौन डिसाइड करेगा? आरबीआई। व्हाट इज द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, दैट इज आल्सो डिसाइडेड बाय आरबीआई। एंड जो रिक्वायरमेंट्स ऑथराइज्ड डीलर को फुलफिल करनी है दैट इज आल्सो गवर्न बाय आरबीआई। यूपीआई पे नाउ लिंकेज, किसी ने इसके बारे में सुना? एनीवन नो? जबकि अभी बहुत सारे इंक्लूडिंग सिंगापुर बहुत सारे कंट्रीज ने ना यूपीआई का सिस्टम अडॉप्ट कर लिया ताकि जो यहाँ के भी बेनिफिट हो सकता है अगर यहाँ का कोई पर्सन वहाँ पे जाके पेमेंट दे तो वहाँ पे भी हो सकता है और सेम भी। राइट, सो इट इज अ लिंकेज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर। जो यूपीआई है वो इंडिया का है, पे नाउ जो सेम अपना जैसे यूपीआई है उनके लिए पे नाउ है। सो it enable faster remittance between the India and Singapore. India's retail payment system, unified payment interface, and its equivalent network in Singapore, that is PayNow, were integrated on February 21, 2023. The linkage will allow users from both countries to access faster and more cost-effective cross-border remittances.
अब इधर कुछ बैंक है, यही बैंक्स अलाउ है, मतलब अपन जो यूपीआई पे नाउ से जो भी पेमेंट करेंगे तो ओनली दिस बैंक आर अलाउड टू रिसीव रेमिटेंसेज एंड दिस बैंक्स आर अलाउड टू सेंड दोज रेमिटेंसेज फ्रॉम इंडिया। देयर इज अ डेली ट्रांजैक्शन लिमिट, जैसे अपने पेटीएम करते हैं तो इसमें डेली ट्रांजैक्शन लिमिट क्या होती है? 1 लाख की होती है। तो वैसे इसके अंदर है, इसके अंदर क्या है, ₹60,000 फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर डॉलर 1,000 सिंगापुर डॉलर फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। और अगर वो 2,000 रुपये ही है उसके अंदर, अगर वो इमेज से आप वो करते हो, गैलरी में से इमेज लेकर के करते हो। In the UPI Pay Now linkages transaction only person to person, ये person to person अभी applicable है और ये सिर्फ 2 पर्पसेस के लिए है, एक तो मेंटेनेंस ऑफ रिलेटिव अब्रॉड एंड गिफ्ट अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एंड द प्रिस्क्राइब्ड LRS लिमिट would be applicable. So this is all about from my side. I request Swani to continue the class. So I think what I would say कि इन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंटेशंस बनाया, जो रिसर्च करी, शुरू में डाटा दिया कि साहब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम पहले क्या उसका ओवरऑल लिमिट था, $25,000 से शुरू होकर और $2.5 लाख तक की पूरी जर्नी इन्होंने बताई, और LRS के तहत कितना पैसा अभी तक हर साल बाहर गया है, लोगों ने इस LRS को यूज करके बाहर भेजा है। सो आई थिंक जिस तरीके का रिसर्च इन्होंने किया दैट इज कमांडेबल। और जब भी हम प्रेजेंटेशन बनाए तो अगर देखा जाए तो LRS स्कीम जो है ना, वो देखा जाए तो आई वाज रिव्यूइंग दैट स्कीम, वो 8-10 पेज की है, 4 पेज की है। तो इट इज नॉट कि 4 पेज ही हमें पढ़ने हैं, 4 पेज के पीछे बहुत सारी रिसर्च आपको करनी होती है। बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू गिव योर प्रेजेंटेशन। सो आई थिंक बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन। क्योंकि मैंने तो ये सोचा था कि यार ये 4 पेज में तो कितने 10-20 स्लाइड बना लेंगे, इन्होंने 72 स्लाइड बना, तो पता ही नहीं क्या क्या रिसर्च की होगी। So anyway, Suhani can now continue. Thank you, Yogesh. I'd broadly be covering the permissible capital and current transactions with you all. So as it was already discussed in the previous class, you all must be aware of what capital and current accounts are. So before diving deep into the topic, let me give you a brief overview of the same. Capital account transactions are those transactions which alter any asset or liability for you. So like FDIs, loans, foreign currency accounts in India of resident of NRIs or outside India of resident persons, it all gets covered under capital account transactions. And current account transactions are the transactions in the nature of trade, where once you make payment, the money is gone. You won't get it back. Or once you receive payment, that money, you don't have the obligation to remit it back. So, for instance, in case of imports, when you make payment, that money is gone. It does not alter any asset or liability for you. Same happens in the case of exports. We get a lot of remittances, a lot of money from tours and travels, gifts, and profit, dividends, interest on the investments we make under LRS. So, moving on to the definitions. Capital account transaction means a transaction which alters the assets or liabilities, including contingent liability, outside India of persons resident in India, or assets or liabilities in India of persons resident outside India. Whereas current account transaction means a transaction other than a capital account transaction. A few transactions have been specified below. These transactions originally must have been a part of capital account transaction, but just because they carry a lot of restrictions with themselves and just for the sake of operational convenience, they have been classified as current account transactions. Like payments due in connection with foreign trade, which means payments in relation to exports or imports, payment in relation to goods and services, and relating to all the transactions that are necessary for conducting business activities across borders, payment due as interest on loans, and as net income from investment, which means the interest that you pay on the loans you take, or the income that you receive on investments you make, like dividend, etc., is also a part of current account transaction. Remittances for living expenses of parents, spouse, and children residing abroad. You can also remit funds abroad for the living expenses like housing, utility, commodity, etc. of your parents, spouse, and children
and expenses in connection with foreign travel, education, and medical care of parents, spouse, and children. So here are a few permissible transactions. They have been classified as permissible current account transactions and permissible capital account transactions. I'll be discussing each one of them in detail in the next slides. Permissible current account transactions. So private visit to abroad. Resident individuals, except those who are traveling to countries like Nepal and Bhutan, they have the option of drawing foreign exchange amounting to the LRS limit of US dollars $250,000 from an authorized dealer or fully pledged money changer in a financial year. This allowance applies regardless of the number of trips you take. So it means आप चाहे भले एक ट्रिप करो या आप 50 करो, आपकी लिमिट 2,50,000 है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए. अच्छा, नेपाल और भूटान क्यों बाहर है? वहां पे इंडियन रुपीस भी चलता है, तो इन्होंने उसको वहां उसमें नहीं करा. लेकिन जब भी आप बाहर जा रहे हो, आप ट्रैवल के लिए जा रहे हो, वेकेशंस के लिए जा रहे हो, तो देन यू नीड टू कंसीडर दैट सच अमाउंट इज रेमिटेड विद इन दिस लिमिट. हालांकि $2.5 लाख कितना हो गया, काफी बड़ा अमाउंट हो गया ना. एंड दैट टू पर रेजिडेंट, है ना, करीब करीब 2 करोड़ के ऊपर का अमाउंट हो गया, 2-2.5 करोड़ के आसपास. तो द पॉइंट इज इट इज पर पर्सन. तो अगर घर फैमिली में 4 लोग हैं तो पर पर्सन यू कैन सेंड अप टू $250,000. So all the expenses related to the tour, like transportation costs or overseas lodging expenses, they all will be covered under the limit of $250,000. And tour operators, they have the flexibility of collecting the funds from you either in rupees or in foreign currency. Next comes gift or donation. Resident individuals, they can remit funds up to the specified limit as gift to a person residing outside India or to an organization in the form of donation. So gifts in rupees, it should be made by the way of cross checks only, and it should be credited. It should be deposited to the non-resident ordinary account of the NRI person or PIO person. Next comes going abroad on employment. So this provision is for individuals who move out for employment opportunities, job transfers, or for assignment in foreign countries. Individual is allowed to draw up to the LRS limit. That is USD $250,000 only, and this limit is said to facilitate the individual's financial needs while working abroad and covers various expenses related to his living, accommodation, etc. बट ये लिमिट का मतलब ये हो गया कि टोटल लिमिट इतनी है. अगर आपने मान लीजिए कि 50,000 विजिट अब्रॉड के लिए यूज कर ली, तो फिर बाकी के लिए 2 लाख ही कर पाओ. ऐसा नहीं कि हर एक के लिए 2.5 लाख है. ऐसा होने लग गया तो पता चला कि सारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही अपना ड्रेन हो गया. Next is emigration. Any individual who wants to emigrate, he can draw foreign exchange up to the prescribed limit or up to the estimation that is provided by the country of emigration, whichever is higher. Which means आप 2,50,000 तक तो ड्रॉ कर ही सकते हो, बट आपको उससे ज्यादा ड्रॉ करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट आपको एक एस्टिमेट प्रोवाइड करना पड़ेगा. However, there is a restriction that any additional amount that you draw over and above $250,000, it should be used for incidental expenses in the country of immigration only, and it cannot be used for earning points or credits to become eligible for immigration by way of overseas investment in government bonds, land, commercial enterprises, etc. Moving on, maintenance of close relatives abroad. A resident individual can also draw and remit funds up to $250,000 for the purpose of supporting his relatives who live abroad. तो इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा. ये इसने जो बताया वैसा नहीं, थोड़ा सा चेंज है. ऑलमोस्ट इज करेक्ट कि आपका टोटल लिमिट अगर 2.5 लाख के बाहर जा रहा है उस पर्टिकुलर साल के अंदर, आपने कुछ अब्रॉड कर लिया, कुछ एम्प्लॉयमेंट की वजह से कर लिया, तो जो टोटल लिमिट 2.5 लाख के बाहर जा रहा है और उसके बाद भी सपोज इमिग्रेशन के लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स और जरूरत आपको है, तो वो ये कह रहे हैं कि यस दैट कैन बी डन इफ इट इज टुवर्ड्स मीटिंग द इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इन द कंट्री ऑफ इमिग्रेशन, और किसी और चीज के लिए नहीं होना चाहिए.
Next point is business trips. So any visit by the individual for attending any sort of seminars or conference or international training constitutes of business visits. So the expenses that are incurred by the individual can be covered under the limit of LRS. However, there's a catch in this. If the individual is going on behalf of his entity, if the entity is sending that individual, so and if the entity covers all of his expenses, so this is termed as residual current account transaction and it is not covered under LRS. The authorized dealer, he may also provide funds over and above the limit that is contingent upon him verifying the legitimacy of the transaction. So this does not form a part of LRS if he is going on behalf of his entity. Next is student studying abroad. Authorized dealer may provide you up to the LRS limit if you want to go and study abroad. However, if you want some more exchange, then you have to provide an estimate from the respective university and you'll get the same amount without approval from RBI. Medical treatment abroad. So same happens in the case of medical treatment. You'll get the specified amount up to the limit, and if you want any additional amount, then you have to provide an estimate from the hospital or from the doctor. And any person who is going with the patient as his attendant also has his own separate limit of $250,000, which he can utilize. So next point is the remittances under the scheme. They can also be used for purchasing objects of art. It can also be used for outward remittances in the form of a demand draft, either in the resident individual's own name or in the name of beneficiary with whom he intends putting through the permissible transactions at the time of private visit abroad, provided that he has to file a self-declaration in the form A2, which will be discussed later. And banks should also not facilitate, they should not extend any kind of credit facilities to facilitate capital account transactions, which means कि individuals को खुद के अपने funds use करने चाहिए for the purpose of LRS. They should not borrow any funds and then use same for remittance under LRS. So that was all for permissible current account transaction. Moving ahead, we have permissible capital account transactions. The first one being opening foreign currency account with a bank abroad. A resident individual is also allowed to open, maintain, and hold a foreign currency account with a bank outside India for making remittances under the scheme without the prior approval of RBI. So you can use this account for making all the transactions that have been allowed under the scheme. Any unspent money, any unused foreign exchange that is lying in such bank account, it has to be repatriated back. It has to be bought back and surrendered to the authorized dealer within a period of 180 days. So it means कि या तो आप उसको utilize करो और आप utilize नहीं कर रहे हो तो आप उसको वापस भेजो. Same happens in case of investment made under LRS. आपने कोई investment करा है बाहर, उस पे आपको जो भी dividend मिला है, कुछ भी मिला है, उसको या तो आप reinvest करो और अगर आप उसको भी reinvest नहीं कर रहे हो, so you have to bring it back to India within a period of 180 days and give it to your authorized dealer. Next is acquisition of immovable property abroad. So resident individuals, they are also allowed to acquire immovable property outside India by the way of purchase out of remittances sent under LRS. So such remittances, they can also be consolidated in case of relatives, provided that such relatives, they should be resident in India and they have to comply with the terms and conditions under the scheme. Next is family members. So family members, can they club their remittances under the scheme? Yes, very well they can. However, in the case of capital account transaction, like if they want to buy a property, if they want to invest or open a bank account abroad, so in that case, pooling is permitted only if you buy the property or open the bank account in joint names, as joint owners, as co-owners. Otherwise, it is not allowed. And also, you should be co-owner of such property in the proportion of the amount you remit under such scheme. So, for instance, there's a person X who wants to buy a property abroad. The cost of the property is 4,50,000 USD. However, he can only remit, he can only use 2,50,000 USD. And वो अपने son Y की भी limit use करना चाहता है. So it doesn't mean कि वो सिर्फ अपने नाम में वो property खरीद सकता है. He has to
Hello. Now you again share. Visible. Not to you. Shall I share it again? Shall I? एक बार वापस share करो. So this happens mainly because there's a rule that एक रेजिडेंट दूसरे रेजिडेंट को फॉरेन करेंसी एज गिफ्ट नहीं दे सकता है. तो अगर आपको एज को ओनर्स उस प्रॉपर्टी को परचेज नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इट विल बी अगेंस्ट द रूल. इट वुड एक्चुअली मीन कि आप रेमिट कर रहे हो एक रेजिडेंट को फॉरेन फंड फॉरेन करेंसी. So which is why it is prohibited. Next comes extending loans to relatives abroad. A person who is resident in India, he can extend loan to a person who is not resident in India or a person of Indian origin only in rupees. So it is subject to the following conditions. First of all, the loan should be free of interest and the minimum tenure of the loan, it should be 1 year. The loan should be within the LRS limit of USD $250,000. The loan, it should be utilized for meeting the borrower's personal requirements or for his own business purposes in India. The loan, it should not be remitted outside India. The amount of the loan should not be remitted outside India. It should be credited to the NRO account of the non-resident of India or the PIO. और जो लोन का अमाउंट है it should not be used for investment in any of the business activity in any of such activities that are prohibited. So a few examples being the business of chit fund. You cannot utilize the amount of loan for investment in business of chit fund, in Nidhi company, agriculture or plantation activities in real estate businesses, or construction of farmhouses, or for trading in transferable development rights. And the repayment of the loan, it should be through the way of inward remittances through normal banking channels or by debiting the NRO, NRE or FCNR account of the borrower or through the sale proceeds of the shares जिसके लिए वो लोन लिया गया था, जिनको खरीदने के लिए वो लोन लिया गया था. Moving ahead. तो आपने पैसा बाहर भेज दिया तो आप कोई भी काम जो डायरेक्टली प्रोहिबिटेड है उसको आप इनडायरेक्टली नहीं कर सकते. तो आपने क्या करा कि रिलेटिव को पैसा दे दिया और कहा कि यार आप इसको इन्वेस्ट करो. तो दैट इज आल्सो नॉट परमिटेड, क्योंकि रिलेटिव को पैसा देना इज परमिटेड, बट देन रिलेटिव हैव टू यूटिलाइज इट फॉर ओनली द परमिटेड पर्पसेस, नॉट फॉर द प्रोहिबिटेड पर्पसेस. तो then one need to take lot of declarations and all that. So the next topic, the next permissible capital account transactions are going to be ODI and OPI under LRS. Before jumping into the language of law, let's discuss it in a layman language that what does it actually mean. First of all, let me tell you, ODI and OPI are part of Overseas Investment Rules and Regulations 2022, which is a very vast topic and hopefully will be discussed in one of the coming classes. So ODI and OPI, does anyone know what do they basically mean? So ODI is basically long-term investment. It's like a business or something. जैसे मैं बाहर अपनी कोई subsidiary खोलना चाहती हूँ, so that's going to be an ODI for me. Whereas OPI means investing in a group of assets and just to earn returns. That's it. आप उसको खुद का business नहीं मानते हो, आपको सिर्फ return से मतलब है. It can be either long-term, it can be either short-term. It depends. Also, can anyone tell me what's the difference between FDI and ODI? Very basic question. Foreign से इंडिया में होता है वो FDI है, इंडिया. Right. Right. So also before getting into the definition of ODI, the word foreign entity would be used lot of times here. So let me clear out the definition of that as well. Foreign entity means any entity that is registered or incorporated outside India and it has a limited liability. However, the clause of limited liability is not applicable to foreign entities whose core activity is in strategic sector, which means energy sector,
or like strategic sector basically means energy sector or startups, etc. IFSC is also an ODI. We'll discuss about IFSC in the later section. So ODI. Let me break the definition into 4 parts for you all. Overseas direct investment means investment by way of acquisition of unlisted equity capital of a foreign entity, which means if you're acquiring the shares of a foreign entity that is not listed on any of the stock exchanges, it would amount to ODI. Or subscription as a part of MOA. It means you are investing in a foreign entity and you're taking part in its initial capital formation, being the first subscribers of MOA. So that too is also ODI. Investment in 10% or more of the paid up equity capital of a listed foreign entity. अगर आप लोग 10% या more paid up equity capital share acquire कर रहे हो किसी listed foreign entity का, so that too amounts to ODI. And control investment with control where investment is less than 10% of the paid up equity capital of a listed foreign entity. और अगर आप 10% से कम paid up equity share capital acquire कर रहे हो किसी listed entity का, but you still have control in that entity, so that too would amount to ODI. ODI is in an operating foreign entity not engaged in financial services activity. So ODI typically involves investing in foreign entity that is operational in nature. What does it mean that it is operational in nature? It means that it is involved in business activities like manufacturing, trading, services, etc. And these entities, they should not primarily operate in financial service activity like banking, insurance, brokerage, etc. Also, the entity does not have subsidiary or step-down subsidiary that the resident individual has control at the foreign entity. So, what is subsidiary? Subsidiary is किसी foreign entity का किसी और entity में control है. So that basically is its of the foreign entity and its subsidiary should be same. For instance, if foreign entity has limited liability, its subsidiary should also have limited liability only. However, there's an exception that even you can invest in an entity being a financial which primarily operates in financial services activity, provided that you acquire it share by the following 3 ways. First of all, shares that are acquired as sweat equity shares. What are sweat equity shares? They're the shares that are given to employees or directors of the company as a part of their compensation for the services they provide to the company for the efforts they make. Next is ESOP. ESOP means the employees, they are allowed to buy the shares of a company at a predetermined price. And the next one is minimum qualification shares for holding management posts. So for instance, if you want to become a director of the company, so आपको the minimum qualification shares, it is not there in company law. However, it is there in some foreign countries. So for instance, if you want to become director in a company, so आपको minimum shares acquire करने पड़ेंगे to become the director. For instance, एक company है उसके आपको 10 shares खरीदने पड़ेंगे to become the director. So those are termed as minimum qualification shares. So if you acquire shares in a foreign entity by these 3 ways, so it would still amount to ODI, even though it is ODI in an entity that is primarily engaged in financial services. Next point being where a resident individual, he has made ODI in a foreign entity, but उसके पास control नहीं है और आगे जाके वो foreign entity अपनी खुद की कोई subsidiary या step down subsidiary set up करती है, तो उस individual वो individual आगे जाके control नहीं gain कर सकता इस foreign entity में, it is not allowed. Also control under this act, it means the right to appoint majority of directors or the right to control the management or management decisions. And also it is gained by the virtue of holding 10% or more voting rights. Next comes investment in the form of equity or personal guarantees is allowed. Investment by the way of loan is not allowed. If acquisition of even 1 share amounts to control, तब भी वो ODI होगा, even though you don't have 10% paid up equity share capital. Capitalization within the time period of any amount due from the foreign entity, which means, for instance, मैंने किसी foreign entity को कुछ loan दिया, but वो मुझे वो repay नहीं कर पा रही है, तो उसने मेरे को ऑफर दिया कि
the debt can be converted into equity. वो बदले में मेरे को shares दे देगी. So this basically is debt capitalization. So debt capitalization is also a mode for ODI. Investment should be the investment's valuation should be at arm's length basis, and investment from EEFC and RFC accounts, they should also be included within the LRS ceiling limit. OPI under LRS. OPI basically means any investment which is not ODI, which is not in the unlisted debt instruments, or which is not in the securities that are issued by residents of India outside. For example, मैं HDFC बैंक हूँ, मैं कोई मसाला bonds issue कर रही हूँ बाहर जाके, तो उन उसमें invest करना that wouldn't amount to OPI क्योंकि वो एक resident नहीं issue कर रहा. Also, OPI by a person resident in India in the equity capital of a listed entity, even after its delisting, shall continue to be treated as OPI until any further investment is made in the entity. So once it is an OPI, once it is declared as an OPI, it would still continue to be an OPI only. Same happens in the case of ODI. मैंने किसी entity की किसी listed entity की 12% holding subscribe की है, आगे जाके for any reason मेरी holding उसमें 12 से 8 हो गई. So that would still be an ODI because once an ODI remains an ODI. Even though मैं उसमें control भी use कर दूँ, तब भी वो ODI ही रहेगा. Here are a few modes by which you can make overseas portfolio investment, like reinvestment of earnings. मेरा बाहर कोई portfolio है $400 million, उस पे in an year I earn like $1 million something. तो मैं उसको भी अपने portfolio में लगा सकती हूँ instead of bringing it back. So that would amount to reinvestment of earnings. Capitalization of permissible dues, which has been already discussed, that capitalization of unpaid debt. Swap of securities basically means exchange of securities. It's like a barter or trade. Acquisition of equity capital through right issue or allotment of bonus shares. Gift, inheritance, and acquisition of less than 10% of the equity capital, whether listed or unlisted, of a foreign entity without control by the way of sweat equity shares, minimum qualification shares, or acquisition of shares. तो आप किसी भी listed या unlisted entity में shares acquire कर रहे हो by the way of sweat equity shares, ESOP, or minimum qualification shares, and you don't have control, you still don't have control, so that would amount to OPI. So moving ahead, we have the topic remittances to International Financial Service Center. So before discussing the conditions, can anyone tell me what an IFSC is? No? IFSC is a designated financial hub within a country that provides a conducive environment for conducting various financial services on an international scale. It promotes foreign investment, it facilitates cross-border transaction, it also promotes financial innovation. So IFSCs, they host a wide array of financial services like banking, insurance, etc. And as I already mentioned, IFSCs are treated as foreign entity only. So if you are investing money in IFSC, that would amount to OPI because it is also included in the definition of OPI. Do you all know how many IFSCs are there in India? And can you name them? That's it? Yeah. So there's one IFSC in India, that is GIFT City in Gujarat. It stands for Gujarat International Finance Tech City, and it is the first and the only IFSC in India up till now. It also serves as a special economic zone, and it offers various tax benefits, regulatory relaxations, and incentives to attract businesses, to attract investors. For more insights, you can refer to a class that was already conducted on the topic of GIFT City. Moving ahead, remittances to International Financial Service Center. You can remit to IFSCs also, provided that you follow the conditions that have been provided, that have been listed below. First of all, remittances made under the LRS, they can be used for only making investment in securities within IFSC. So you can use the remittance under LRS सिर्फ उन्हीं securities में invest करने के लिए जो IFSC के अंदर जो entities है उन्होंने issue किया है.
उसके बाहर you cannot use that money. Resident individuals, they are also permitted, they are also allowed to open non-interest bearing foreign currency accounts in IFSCs. So basically, what is the purpose of these accounts? These accounts are designated for making investment in permissible securities within the IFSC under the LRS. Restriction on domestic transactions. The foreign currency accounts that are held by the resident individuals in the IFSCs, they are prohibited from making any sort of domestic transactions with other residents. So this restriction, it ensures that the funds that are held in FCAs within the IFSCs, they are used only for investment in permissible securities within the IFSC. And remittances for studies abroad in IFSCs. Authorized persons, they are allowed to permit remittances under the purpose studies abroad for payment of fees to foreign universities or institutions located within the IFSCs. This provision enables resident individuals to utilize funds under the LRS for educational purposes within the IFSC environment. So, I'm done with the topics, permissible capital and current account transactions. So to sum up, I have a case study for you all. Mr. Vivek. So basically, जो LRS है, LRS के तहत जो $250,000 की लिमिट है, you can also make ODI within these transactions. You can make, overseas portfolio investments also. और जो मसाला बॉन्ड की ये बात कर रहे हैं कि आप मसाला बॉन्ड जैसे SBFC ने, NTPC ने, तो वो बेसिकली यहाँ की कंपनी ही बाहर इशू कर रही है. तो इन्होंने कहा कि दैट इज नॉट ए प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट्स. उसमें आप रेगुलर वो उस लिमिट में काउंट नहीं हो रहा. दैट इज व्हाट वन थिंग इज. देन IFSC में भी ऑल्सो देयर मे बी सम. अभी आप बोलोगे कि सब IFSC तो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसमें इस लिमिट की कहाँ जरूरत है. सो इट इज नॉट अ केस, दैट इज ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन. तो एक तरीके से वो इंडिया में ही उसको ट्रीट ऐसे करा गया है एज इफ इट इज ए फॉरेन लैंड, इट इज ए फॉरेन जुरिसडिक्शन. तो देयरफॉर दे सेड कि अगर आप IFSC के अंदर भी कोई कंपनी लिस्टेड है और उसकी सिक्योरिटीज में आप पैसा देना चाह रहे हो, तो वो भी ODI की लिमिट के हिसाब से रहेगा. एंड you need to you can invest into that particular company which is there listed in IFSC up to the limit of $250,000, overall limit of $250,000. तो ये overall इन्होंने बताया. And in fact, apart from this limit, she has also introduced to you the concepts कि ODI होता क्या है. So we have a case study for you all. Mr. Vivek, son of Mr. Yash Indoria, a wealthy businessman, is going to USA for further studies after completion of his graduation in India. The cost of his education is estimated to be USD 2 lakh, which Mr. Yash wants to remit from his own funds to his son's account in USA by way of gift. So can you all tell me if this is permissible or not? Are you sure? Correct. It is not permissible because it amounts to transferring foreign currency from one resident to another resident. So this is not permissible. However, there are other ways by which he can remit funds to his son. Like he can remit amount towards his cost of maintenance, as I discussed it under cost of maintenance of relatives abroad. That's the way. By that way, he can remit it abroad. Or the son can also use his own LRS limit. Next is Mr. Yash is a partner of Messrs. Yash Sales and therefore wants to travel with his son for promotion of his business. So what do you think? Can he avail funds under the LRS limit for this purpose? बेसिकली जो एक्सपेंडिचर वो मतलब बिजनेस ने करा है, हमने करा है, तो मिस्टर यस की जो इंडिविजुअल लिमिट है उसके ऊपर कोई चेक नहीं है. Correct. So this is outside the scope of LRS, as I mentioned it before. The entity will be covering for its expenses, which is a part of residual current account transactions, and it does not form a part of LRS. So there's no limit as well. Next is his wife, Mrs. Tanisha, will join for a pleasure trip. So
can she draw funds or not? Yes, she very well can. His mother, Mrs. Hershey, will travel for medical treatment for which hospital has provided estimate of which hospital has provided estimate of USD 3 lakhs. So can she avail amount over and above 2 lakh 50? 50 2 lakh 50 का कर सकते हैं 50 हॉस्पिटल का बिल Right. So I hope all of these provisions are clear to you all. And that was all from my side. Now I'd like to hand it over to Karthik. Thank you. after now 30 years on COVID, no performance session. Okay, hi, myself Kavya, I'm from number 25 batch. Now we'll be discussing further about the procedures of LRS, how you can remit funds for to foreign countries, and what are its compliance and reporting, and about the TCS implications on the LRS. Okay, procedure for remittance. RI stands for here resident individual will have to designate a branch of AD bank through which all the remittance under LRS will be made. Now, we have already discussed how AD banks are approved by the RBI, but for a bank to be authorized dealer, RBI will approve it. RI should have maintained the bank account with AD bank for a minimum period of 1 year prior to remittance for capital account transactions. एक साल के लिए मिनिमम आपको बैंक में अकाउंट होना ही चाहिए, और अगर नहीं भी होता है तो आपका जो ऑथराइज डीलर है वो विद ड्यू डिलिजेंस आपका देखेगा कि आपका अकाउंट ओपन कैसा हुआ था, उसका ऑपरेशन क्या है और वो स्मूथली रन हो रहा है क्या, और अगर वो इससे सेटिस्फाई है तभी वो आगे आपको रिमिट करने देगा, नहीं तो वो रिपोर्ट करेगा आरबीआई को कि इसका जो डॉक्यूमेंट्स अपन ने प्रोवाइड करे हैं या वेरीफाई अपन जो कर रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसीलिए वो आरबीआई को रिपोर्ट करेगा. RI has to furnish form A2 to AD bank. If remitter is minor, form must be countersigned by natural guardian. A2 जो है वो अपना एक फॉर्म है जो कि रेमिटर AD बैंक को देगा खुद डिक्लेयर करते हुए कि मेरे को कितना अमाउंट फॉरेन रेमिट करना है. एंड पैन इज मैंडेटरी. Some of the operational instructions we'll be discussing about them. The applicant to declare that total amount of foreign exchange purchased from or remitted through all sources in India during this financial year, including that application is within the annual LRS limit. जो एप्लीकेंट है वो डिक्लेयर करेगा कि उसने ऑल ओवर इंडिया कितना फंड रेमिट कर चुका है अब तक, इंक्लूडिंग द अब जो एप्लीकेशन वो लगाने वाला है जो कि अपना ओवरऑल प्रिस्क्राइब्ड लिमिट $250,000 से कम होना चाहिए. RBI will not generally prescribe the documents which should be verified by the authorized person while releasing foreign exchange for current account transaction. RBI ने कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रखा. It's up to AD बैंक की उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए for verifying and remitting the currency. In terms of subsection 5 of section 10 of FEMA 1999, AP shall require any person desiring to transact in foreign exchange to make such a declaration and give such information as will reasonably satisfy him that the transaction will not involve and is not designed for the purpose of any contravention or evasion of the provisions of FEMA Act. तो FEMA Act का कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं होना चाहिए. अगर वो AD बैंक को लगता है कि कॉन्ट्रावेंशन है तो उसको RBI को रिपोर्ट करना है. While allowing the facilities to resident individuals, authorized dealers are required to ensure the KYC guidelines and AML guidelines जो है, जो RBI ने AML guidelines और KYC guidelines जो इशू कर रखी है AD बैंक को, वो भी पूरा कंप्लाई करना पड़ेगा उससे. AD in order to maintain uniformity may consider requirements or documents to be obtained by the branches to ensure compliance with provision of subsection 5. सबसेक्शन 5 वही कह रहा है कि कोई कॉन्ट्रावेंशन अगर FEMA एक्ट का हो रहा है तो आपको रिपोर्ट करना है RBI में. AD shall certify that the remittance is directly or indirectly not made by or to ineligible entities and that the remittance is in conformity with the instruction issued by RBI
from time to time under the scheme. अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन सा अपना परमिसिबल ट्रांजेक्शन है और अपने कौन से प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन है, और जो इनएलिजिबल एंटिटीज है वो फंड ट्रांसफर नहीं कर सकती, और फॉरेन में वो इनएलिजिबल एंटिटीज फंड रिसीव भी नहीं कर सकती. AD should ensure that the payment is received out of funds belonging to the person seeking to make the remittance by a check drawn on the applicant's bank account or by debit to his account or the demand draft or pay order. ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ये भी कि अपना खुद का फंड होना चाहिए, अपन किसी और की इनकम से या फिर किसी और सोर्स ऑफ फंड से रेमिट नहीं कर सकते, और बैंक अपने को कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देगा रेमिट करने के लिए. इट हैज टू बी थ्रू आवर ओन फंड्स. अब ये अपना एक इलस्ट्रेशन फॉर्म A2 है. जरूरी नहीं है कि ये फॉर्म A2 सिर्फ इसी तरीके का हो, हर AD बैंक का अपना एक अलग तरीका है इसको शो करने का. इसके अंदर फॉर्म A2 के अंदर अपन क्या क्या डालेंगे, जो रेमिटर है वो अपनी पर्सनल डिटेल्स फॉर्म A2 के अंदर शो करेगा. डिटेल्स ऑफ ट्रांजेक्शन, उसको कितना रेमिट करना है, कौन सी करेंसी में करना है और किधर करना है, ये भी वो इसमें मेंशन करेगा. बैंक की डिटेल्स होगी, जो ऑथराइज डीलर है अपना उस बैंक की डिटेल्स होगी. एक अपने को डिक्लेरेशन अंडरस्टैंडिंग भी देनी पड़ेगी. ये एक सेल्फ डिक्लेरेशन है जो रेमिटर AD बैंक को देगा कि उसने जो भी फंड्स लिए हैं और जो वो रेमिट कर रहा है वो उसके खुद के फंड्स के थ्रू है, और वो कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं हो रहा है किसी भी एक्ट का जो भी इस पे लग रहे हैं. और अगर कोई इसके अंदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर लगते हैं तो वो भी इसके साथ ही जाएंगे. जैसे कि मेडिकल के अंदर आपका अगर कोई मेडिकल बिल है या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट, आपका कोई स्टूडेंट के लिए कोई फीस रिसिप्ट है, और ये भी इसी के साथ में सपोर्टिंग एज अ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपन AD को प्रोवाइड करेंगे. नाउ दीज आर सम अदर पॉइंट्स, लेट्स जस्ट हैव अ लुक एट देम. Soliciting deposits. All banks, both Indian and foreign, including those not having an operational presence in India, should seek prior approval from RBI for the scheme being marketed by them in India to residents, either for soliciting foreign currency deposits or their foreign overseas branch, or for the acting as agent for overseas mutual fund or any other foreign financial services. इसमें क्या कह रहा है, एज अ रेमिटर मैं बाहर रेमिट करना चाह रहा हूँ, लेकिन एज अ कुछ बैंक्स हैं इंडियन या फिर फॉरेन जो कि ऑपरेशन नॉन ऑपरेशनल प्रेजेंस है जिनका इंडिया में, बट वो कह रहे हैं कि आप डिपॉजिट्स करिए. वो एज अ एजेंट काम कर रहे हैं यहाँ पे. वो बोलना चाह रहे हैं कि आप ओवरसीज म्यूचुअल फंड्स में डालिए या फिर ओवरसीज उनकी जो खुद की ब्रांच है उसके अंदर डालिए. तो अब इसके लिए वो अगर एडवर्टाइज करेंगे तो उसके लिए उनको सबसे पहले RBI का अप्रूवल लगेगा, क्योंकि उस एडवर्टाइजमेंट में हो सकता है वो फुल डिस्क्लोजर ना हो, और एज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल ये कुछ कंसर्न्स खड़े कर देता है अपने इंडिविजुअल्स के लिए. इस पे सुपरवाइजरी कंसर्न्स भी इतने नहीं है जितने होने चाहिए. तो इसलिए इस पे थोड़ा सा सुपरवाइजरी और होना चाहिए, क्योंकि these are advertisements which are not fully disclosed. रिटेन या रीइन्वेस्टमेंट, ये आप पहले ही देख चुके हैं. रिटेन या रीइन्वेस्टमेंट, अगर अपना कोई भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो उसको 180 डेज के अंदर अपन को वापस से लेना है इंडिया के अंदर. एज यू कैन से ऑथराइज पर्सन को वापस से देना है. अब मैंने इन्वेस्ट करा पूरा $2.5 लाख. $2.5 लाख पे मेरे को इन्वेस्टमेंट में मिल गया $50,000 का. अब क्या वो $50,000 मैंने 180 दिन के अंदर लेना है वापस. मैंने $1 लाख ले लिया, तो क्या मैं बाकी का बचा हुआ वापस से जो मेरी लिमिट है $50,000 की वो मैं वापस से रेमिट कर सकता हूँ? क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ, नहीं कर सकते हैं. हाँ, एक बार आपने अगर एक बार 2.5 लाख आपके इंडिया से बाहर रेमिट कर दिए हैं आपने, तो आप उसको वापस से रिटेन करने के बाद में उसको वापस रेमिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक बार की लिमिट आपकी पूरी. ये बहुत रेलेवेंट है. ऐसा नहीं कि साहब मेरा पैसा वापस आ गया मैं वापस भेज सकता हूं. ये केवल भेजने की लिमिट है. आपने रिलेटिव को भेजा एज पर व्हाट शी टोल्ड अस कि रिलेटिव को अपन LRS में भेज सकते हैं. रिलेटिव ने वापस आपको लोन का चुका वो कर दिया, रिपेमेंट कर दिया. यू कैन नॉट सेंड इट बैक इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. अब LRS के आप कुछ बेनिफिट्स बता सकते हैं?
फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल बचेगा अपना। ये अब्रॉड पढ़ने जाएंगे तो LRS को यूज करेंगे। आपको कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट या फिर स्टडी अब्रॉड, आपने जो बोले वो भी सही है। अब इसमें और थोड़े से लिखे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं। The liberalized remittance scheme in India offers several benefits to resident individuals, allowing them to remit a certain amount of money abroad for various purposes without seeking specific approval from the Reserve Bank of India. Here are some key benefits of LRS. जैसे कि आप लोगों ने बोला, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। अपन सिर्फ इंडिया के अंदर ही इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अपन इंडिया के बाहर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उधर के इन्वेस्टमेंट अपना जो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाहर के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। It provides an opportunity for individuals to explore investment options beyond domestic market, potentially mitigating risk associated with the market fluctuations. जो अपना इंडिया का मार्केट फ्लक्चुएशन है, अगर उसका रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं अपन, अगर अपन बाहर भी पैसा अपना अब्रॉड में इन्वेस्ट करते हैं तो। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अब्रॉड, LRS permits remittance for educational purposes, enabling individuals to fund education and training programs abroad for themselves or their dependents. It facilitates access to international educational institution and program. International travel, अगर अपन बाहर घूमने जा रहे हैं, ओवरसीज पैकेज, ये सब में भी अपना LRS ही काम आएगा। LRS allows individuals to remit funds for international travel, including tourism, business trips, and medical tourism. It provides flexibility and convenience for individuals planning travel outside of India. Medical treatments पे भी, real estate investments, LRS allows individuals to invest in real estate properties allocated outside India, providing an avenue for diversifying real estate holding and potentially benefiting from international property markets. Global asset allocation, आपका asset सिर्फ इंडिया में ही नहीं, आप बाहर भी अपना asset purchase कर सकते हैं। Individuals can use LRS to diversify their asset allocation globally, spreading their financial holdings across different currencies and jurisdictions. Facilitates NRI transactions, अपन NRIs के साथ ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, अपना सिंप्लीफाइड हो जाएगा ट्रांजेक्शन NRIs के साथ बिटवीन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एंड NRIs. Encourage financial planning, LRS encourages individuals to engage in financial planning by providing them with the flexibility to manage and allocate their funds for various purposes in a global context. It boosts economic ties by allowing residents to participate in global transactions. LRS contributes to the promotion of economic ties between India and other countries. ये वही अपना फोरेक्स जो है वो भी मेंटेन होगा, इसके साथ में दूसरी कंट्रीज के साथ में अपने टाइज भी बढ़िया बने। कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग, अब इससे पहले आने से पहले मैं ये आपने आपसे पूछना चाहता हूँ कि LRS जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए एलिजिबल क्यों है? कंपनीज, HUF, इन सब के लिए एलिजिबल क्यों नहीं है? ये सब एलिजिबल क्यों नहीं है अंडर LRS? अगर वो 2.5 लाख की लिमिट होती है एप्लीकेबल होगी तो इतने ट्रांजैक्शंस को, क्योंकि अदर इंडिविजुअल को ज्यादा ट्रांजैक्शंस करनी होगी। हाँ, तो जैसे कंपनी और एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों रहेगी तो बैलेंस तो चलता ही रहेगा। नहीं, बट इसके अंदर क्या है, जैसे अपना एक तो अगर ये सब भी अदर देन इंडिविजुअल भी करेंगे तो कैपिटल फ्लाइट जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा इंडिया से, जो अपना फंड जो है वो बहुत ज्यादा बाहर रेमिट हो जाएगा, जिसकी वजह से अपना फॉरेक्स रिजर्व जो है वो हैम्पर होगा। और उसके बाद में अपना टैक्स कंसिडरेशन है, इंडिविजुअल्स पे अलग टैक्स कंसिडरेशन है अपने अदर देन इंडिविजुअल से, तो उनका जो अपना टैक्स को ट्रेस करना और ये सब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा इंडिविजुअल्स के कंपैरिजन में। अगर अपन रेगुलेटरी बर्डन की बात करें इस पे, तो इस पे वही वेरिफिकेशन और कंप्लायंस, उन जो अपना डॉक्यूमेंट्स जो भी अपने कंपनी या फिर अदर देन इंडिविजुअल्स को सबमिट करने पड़ेंगे एज कंपेयर टू इंडिविजुअल्स, वो अपना बहुत ज्यादा बल्कि हो जाएगा, उनको वेरीफाई करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। और मिसयूज पोटेंशियल, the complexity of non-individual transaction could increase the risk of misuse, requiring more extensive monitoring and enforcement mechanism. अभी इंडिविजुअल्स के ट्रांजेक्शन्स को ही मॉनिटर करने में कई बार दिक्कत आ जाती है, लेकिन अगर अपन अदर देन इंडिविजुअल्स को भी ये स्टार्ट कर देते हैं तो इनको ट्रांजेक्शन्स को मॉनिटर करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी और हो सकता है कि मनी लॉन्डर हो, इसके रिस्क बहुत ज्यादा है। नाउ वील बी
discussing about compliance and reporting. Compliance and reporting plays a crucial role in the proper functioning of the LRS in India. The RBI has established guidelines to ensure that the scheme is used for legitimate purpose and in accordance with the regulatory framework. Key aspects related to compliance and reporting of LRS. Authorized dealers. आप लोगों ने ऑथराइज डीलर्स के बारे में जान ही लिया. ऑथराइज डीलर्स क्या होते हैं? दे प्ले अ की रोल इन वेरीफाइंग द पर्पस ऑफ द रेमिटेंस एंड इंश्योरिंग कंप्लायंस विद द आरबीआई गाइडलाइन. आरबीआई और रेमिटर के बीच में जो कंप्लाई कर रहा है रेमिटर पे, वो अपना ऑथराइज डीलर्स ही है. परमिसिबल ट्रांजेक्शंस. अपने को परमिसिबल ट्रांजेक्शंस के जो अपने ट्रांजेक्शन परमिसिबल है, अपन सिर्फ उन्हीं को रेमिट कर सकते हैं. Monitoring transactions. Authorized dealers are required to monitor LRS transactions to detect any potential misuse or non-compliance. Transactions exceeding certain limits may require additional documentation or scrutiny. जैसे कि अपना कोई भी permissible transaction 2.5 लाख के ऊपर जा रहा है, तो अपने को और उसके लिए आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा या फिर सर्टेन मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ेगा. तो उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन और उनकी स्क्रूटनी अपने को लगेगी. Documentation requirements. Individuals making remittance under the LRS are often required to provide necessary documents to support the purpose of remittance. A2 के साथ में ये अपना documents अपने को लगेगा अगर remit अपन कर रहे हैं तो. Documentation may include invoices, admission letters for educational purposes, medical treatment details and other relevant documents. Annual reporting. जो एडी बैंक है उसको पीरियोडिकली आरबीआई को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि उसने कितना कितना एलआरएस रेमिट किया है बाहर अंडर LRS scheme. Those reports help in monitoring and overall usage of the scheme and ensuring compliance with the prescribed limits and purpose. Changes in limits and guidelines. अगर RBI कोई भी गाइडलाइन या लिमिट को चेंज करता है तो एडी को उससे कंप्लाई करना पड़ेगा. अगर कुछ रेमिट करने से पहले अगर वो चेंज हो गया है तो एडी को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, उसको आरबीआई की कंप्लाई करना पड़ेगा उसके रूल से कि अगर ये चेंज हो गया है तो वो उसके हिसाब से ही उसको रेमिट करे. एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड केवाईसी कंप्लायंसेस. अब कुछ रिस्क भी हैं जो अपने इनके साथ में आते हैं. एलआरएस के कोई रिस्क आप लोगों के हिसाब से? हाँ, इसके अंदर एलआरएस के रिस्क अपन 3 तरीके से देख सकते हैं. रेमिटर के लिए क्या रिस्क है? उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन बर्डन हो जाएगा. उसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसको अप्लाई करना पड़ेगा एडी से, और बल्कि हो सकता है ये वाला मैटर. और एक है हिडन चार्जेस. ये एक क्रूशियल रिस्क है अपन कह सकते हैं, या फिर चैलेंज है कि हिडन चार्जेस जो है, जैसे अगर अपना रेमिट कर रहे हैं अपन तो बैंक चार्जेस लेगा. अगर अपन हिडन चार्जेस को ना देखे, अपन टीसीएस भी देखे, तो टीसीएस भी एडी कलेक्ट करेगा टीसीएस. तो अपने को अपना जो रेमिटेंस का अमाउंट है वो उस हिसाब से ही देना पड़ेगा कि उसमें अपना हिडन चार्जेस हटने के बाद और टीसीएस हटने के बाद में भी अपन जितना रेमिट करना चाह रहे हैं उतना ही रेमिट हो. कुछ बैंक्स के लिए भी जैसे एडी बैंक्स के लिए भी अपना चैलेंजेस हो सकते हैं कि कंप्लायंस कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकती है, उन डॉक्यूमेंट्स को ट्रैक करना, उनकी स्क्रूटनी करना जो भी अपने को रेमिटर ने प्रोवाइड करे हैं, उसमें उनको दिक्कतें आ सकती है. कुछ टेक्निकल नीड्स उसमें अपने प्रॉब्लम्स आ सकती है. कोई मॉनिटर करना, जो भी अपना रेमिट कर रहे हैं अपन, ट्रांजेक्शन जो रेमिट कर रहे हैं उनको मॉनिटर करने में दिक्कत आ सकती है. रेगुलेटर्स के लिए दिक्कत हो सकती है. बैलेंसिंग फ्रीडम एंड कंट्रोल. striking a balance between facilitating legitimate remittances and preventing capital flight or illegal activities can be difficult. अगर अब इनको सम अप करें तो कुछ ये 4 अपने आ रहे हैं. मिसयूज ऑफ फंड्स. जैसे मिसयूज ऑफ फंड्स, मनी लॉन्ड्रिंग आपने बोला, तो वहां पे मनी लॉन्डर के चांसेस रहते हैं क्योंकि ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है. A2 जो अपन फाइल कर रहे हैं एडी के साथ, वो एक सेल्फ डिक्लेरेटरी फॉर्म है. The self-declaration system raises concern about potential misuse of funds for illegal activities like money laundering or financing terrorism. Stricter monitoring and enforcement measures are crucial. Capital flight हो सकती है. Large-scale outward remittance could put pressure on India's foreign exchange reserves, especially during economic downturns or periods of uncertainty. RBI might need to adjust remittance limit or regulations dynamically. फंड्स अगर अपन सारा ही बाहर ले जाने लगे
तो इंडियन कंपनीज के पास फंड्स थोड़ा कम हो जाएगा। एक बबल फॉर्मेशन है। अगर अपन फॉरेन फॉरेन में अगर रेमिट करने लगे तो बबल क्रिएट हो जाएगा एक। और अगर increased investments in overseas assets could lead to speculative bubbles in foreign markets, potentially impacting Indian investors adversely. Tax evasion. Individuals might misuse LRS to transfer wealth abroad illegally, avoiding taxes in India. Robust reporting and collaboration with foreign tax authorities are necessary. अब ये वाला टॉपिक आप सबने पढ़ ही रखा होगा, टीसीएस ऑन फॉरेन रेमिटेंस। टीसीएस अगर अपन कुछ भी बाहर रेमिट कर रहे हैं तो एडी बैंक जो है वो कुछ प्रोपोर्शन अपना टीसीएस कलेक्ट करेगा। टीसीएस प्रोविजन ऑन फॉरेन रेमिटेंस अंडर एलआरएस वर इंट्रोड्यूस्ड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। एडी टू कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम बायर, रेमिटर या फिर बायर ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। टाइम ऑफ टीसीएस कलेक्शन। अब टाइम ऑफ टीसीएस कलेक्शन क्या है? जब या तो अगर अपन उस अकाउंट के अंदर एडी बैंक को अपन फंड्स ट्रांसफर कर दें फॉर रेमिटेंस, या फिर एडी बैंक के अंदर ही अपना अकाउंट है और उस अकाउंट में से जब भी डेबिट हो रहे हो विच एवर इज अर्लियर है उसमें अपना टीसीएस कलेक्ट होगा। अब अगर इसको अपन ब्रेक डाउन करें तो कैसे होगा? अपन अमाउंट बता देंगे, डॉक्यूमेंट्स दे देंगे एडी बैंक को कि इतना अमाउंट हमको ट्रांजेक्ट करना है। एडी बैंक उनको वेरीफाई करेगा। वो वेरीफाई करने के बाद में टीसीएस का अमाउंट देख लेगा, उस पर टीसीएस कैलकुलेट कर लेगा कि कितना लगेगा और रेमिट कर देगा। जो टीसीएस कैलकुलेशन और कटने का जो टाइम है और जो रेमिट करने का टाइम है ये साइमल्टेनियसली चलेगा। Exclusions for applicability of section 206C(1)(g) TCS on foreign remittance किन किन पे अप्लाई नहीं होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एन एम्बेसी, अ हाई कमीशन, legation commission, consulate and the trade representation of a foreign state, a local authority as defined in section 10(20) of the act। local authority के अंदर जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आ गया और इस तरीके की अथॉरिटीज है। any person specified by the central government through a notification in official gazette। TCS is not applicable if the overseas remittance under LRS is subject to TDS and the customer makes TDS। अगर TDS डिडक्ट हो ही रहा है तो फिर TCS के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। अगर अपन NRO को गिफ्ट ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी TCS अप्लाई नहीं होगा। The provision suggests that if there is a transfer of fund to a non-resident ordinary account as a gift, TCS may not be applicable। The NRO account is typically used by non-residents to manage their income earned in India। In context of a gift transfer, TCS might not be applicable। ये कुछ रेट्स है। अभी हाल ही में रेट्स अपनी थोड़ी सी रिवाइज हुई थी। तो जैसे LRS फॉर एजुकेशन आप लोगों ने भी एट द स्टार्टिंग ऑफ द क्लास आप लोगों ने बताया था, ये सारी वही रेट्स है। LRS फॉर एजुकेशन फाइनेंस बाय लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इसमें 7 लाख तक तो निल है और 0.5% अबव 7 लाख एक्सेस पे लगेगा, इसमें एग्रीगेट नहीं। सेम है विद जो न्यू रेट्स आई थी उसमें ये सेम है। LRS फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट या एजुकेशन अदर देन फाइनेंस बाय लोन, तो उसमें 7 लाख तक तो निल है और उसके ऊपर 5% लगेगा और न्यू रेट्स में भी ये सेम है। LRS फॉर परचेज ऑफ ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज जो है पहले 5% लगता था विदाउट एनी थ्रेशोल्ड और अब 5% लगेगा 7 लाख तक और 7 लाख के ऊपर अपना 20% लगेगा। LRS फॉर अदर पर्पस, अगर इन सब के अलावा अगर किसी रीजन से अपन LRS कर रहे हैं तो उसमें निल है अप टू 7 लाख और 5% है ऑन एक्सेस ऑफ 7 लाख। लेकिन इसमें नई जो विद नई रेट जो आई है उसमें है निल फ्रॉम निल अप टू 7 लाख एंड 20% अबव INR 7 लाख। So that was all for the topic I have discussed. Now here are some case studies जो आप लोगों ने केस स्टडीज पहले ही डिस्कस करी थी। सुहानी ने जो केस स्टडी डिस्कस करी थी, अगर उस पर अपना टीसीएस इम्प्लीकेशन होना होता तो उसके अंदर क्या क्या टीसीएस इम्प्लीकेशंस होते। जैसे मिस्टर विवेक है, वो जो फंड्स ट्रांसफर हो रहे हैं एज अ कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस हो रहा है, तो उस पर कौन सा टीसीएस अप्लाई होना चाहिए? अदर पर्पज वाला अप्लाई होगा, बिल्कुल। तो पहले अभी अगर अपन नई रेट्स की बात करेंगे तो उसके अंदर 7 लाख तक कुछ भी नहीं और 20% ऑन एक्सेस ऑफ 7 लाख। और बाकी एक बिजनेस ट्रिप थी,
अब बिजनेस ट्रिप जो है वो अपना LRS के अंडर ही कवर नहीं हो रही है, तो फिर उसके अंदर नो TCS रेमिटेंस वो भी नहीं अप्लीकेबल होगा, ठीक है। प्लेजर ट्रिप थी, प्लेजर ट्रिप पे कौन सा TCS अप्लाई होगा? ओवरसीज वाला क्यों नहीं? नहीं, ये ओवरसीज टूर पैकेज जो है वो वो एजेंट कलेक्ट करता है। अपन प्लेजर ट्रिप पे खुद जा रहे हैं, अपना मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, अपन एजेंट से अपना कोई पैकेज नहीं ले रहे, इसलिए ओवरसीज पैकेज वाला नहीं लगेगा, इस पे भी अदर पर्पसेस वाला लगेगा। और मेडिकल ट्रीटमेंट पे अपना है नील अप टू 7 लाख और 5% अबव 7 लाख। एक केस स्टडी और है, मिस्टर नारी, a businessman wants to open an account with a bank in UAE and remit his full LRS entitlement of USD 2,50,000, anticipating right exchange fluctuation and imminent increase in TCS rate. He has planned to buy immovable property or make other portfolio investment, but as of now has not formed up any plan. तो मिस्टर नारी जो है ये किस तरीके से अपना रेमिट करेगा, इसके अंदर देखा जाए तो मिस्टर नारी जो है इसका अल्टीमेट पर्पस अभी इसको क्लियर नहीं है, तो वो बैंक अकाउंट ओपन करवाएगा। अगर बैंक अकाउंट वो ओपन करवाता है तो वो फॉरेन रेमिटेंस के अंदर अदर पर्पसेस के अंदर आ जाएगा, उस पर TCS सेलेक्ट होगा। और he can invest from this account for any permissible current or capital account transaction, except that he can not use the amount for strategic purpose as he is required to comply with requirements of foreign exchange management. और अगर वो बैंक अकाउंट ओपन कर रहा है तो उस पर अगर कोई भी उसको इनकम आ रही है तो उसको 180 डेज के अंदर वापस से उसको रिटेन करना पड़ेगा या फिर रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट केस स्टडी, इसके अंदर अगर मिस्टर पंकज मेहता है, कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स इंक्लूडिंग हिज वाइफ एंड अ डॉटर, अब उसको बाहर घर खरीदना है, तो कितने तक का उसका लिमिट एक्सटेंड हो जाएगा अगर होता है तो? बिल्कुल, लेकिन अगर डॉटर माइनर है तो? हाँ, तो अपना इस केस के अंदर जो लिमिट है वो एक्सटेंड हो जाएगा 750 पे, क्योंकि अगर वो को ओन कर रहे हैं और उसी प्रोपोर्शन में कर रहे हैं, अगर वो 750 जितने का भी हाउस परचेज करना चाह रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर द PPT, थैंक यू।